शपथ लेगी, मई में शपथ लेगी, तब वो शायद तब तक वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सब लोग मिलकर के सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक लगातार 2047 के भारत का रोड मैप, 5 साल के जो शॉर्ट टर्म गोल्स और आने वाले 25 साल के लॉन्ग टर्म गोल्स पे क्या क्या काम करना है, इस पर डिस्कशंस कर रहे थे, उस पर प्रेजेंटेशंस हो रहे थे। और उन प्रेजेंटेशंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी जो कुछ पिछले 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में काम किया है, चाहे वो सड़कें बनाने का हो, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने का हो, चाहे वो वाटरवेज बनाने का हो, चाहे रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन का हो, चाहे कनेक्टिविटी को लेकर के इंटरनेट पर जो कुछ काम हुआ है, दुनिया जिस गति के साथ में बदल रही है, भारत में अभी जो कुछ हमने देखा है ये केवल एक दशांश है, दैट है 10th पार्ट ऑफ दैट है। आने वाले 10 साल में उससे 10 गुना ग्रोथ हम जो है इस भारत में इन सारे सेक्टर्स में होता हुआ देखें। और जब निश्चित रूप से जब ये होगा, ये परिवर्तन होगा, तो जो है उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर कोई सेक्टर होगा आर्थिक प्रगति का और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का, अल्टीमेटली और फर्स्ट बेनिफिशियरी अगर कोई सेक्टर है तो वो टूरिज्म सेक्टर है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस अपार संभावनाओं से भरे हुए सेक्टर के साथ में हम सब जुड़ें। और मैं पूरे विश्वास के साथ में आप सबको निमंत्रित करता हूं, इस सेक्टर के लिए जहां कहीं भी जिस तरह की जैसी कोई भी आवश्यकता हो, सरकार पूरे खुले मन से आप सब लोगों के साथ में खड़े होकर के निर्णय करने के लिए, आप सब लोगों के साथ में खड़े होकर के इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह का फैसला लेना हो, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स करने हो, उन सब पर हम काम करने के लिए तैयार। आप सब ने देखा अभी भारत का अभी 4-5 दिन पहले मुझे मिलने के लिए एक जो है फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, और उन सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत को आज जो है भारत का जो नया न्यू वीज़ा रिजीम है, जिस तरह से हमने ई वीज़ा पर काम किया, 2-3 देश छोड़ दें जहाँ पे हमें स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं, उन सबको छोड़ दें, बाकी उन सारे देशों में आज भारत का वीज़ा लेने के लिए किसी भी आदमी को अपने घर से बाहर निकल करके एम्बेसी जाने की आवश्यकता नहीं। भारत का वीज़ा ई वीज़ा मिलता है और 72 आवर्स में वीज़ा आपको, आप अपने मोबाइल पे अपलोड करते हो, अप्लाई करते हो, तो 72 आवर्स में ई वीज़ा आपके हाथ में होता है। हम उसके फॉर्म को और भी, जो फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को हम फर्दर उसको कैसे हम और ईज आउट कर सकते हैं, उसमें और कम कर सकते हैं, उसमें जो है पेजेस को हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में भारत का वीज़ा जो है रेसिप्रोकल बेसिस पर जिस देशों ने हमको वीज़ा ऑन अराइवल दिया, हम उन सबको वीज़ा ऑन अराइवल दे दें, इसके ऊपर विचार करके हमने काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अभी जो कुछ हमने किया है, इससे आगे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इंडिया को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिस तरह से ग्लोबल कट थ्रोट कंपटीशन विच आई एम सीइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि सब लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो जितना पॉजिटिव अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, उससे ज़्यादा नेगेटिव दूसरों के करके कॉम्पिटिटर्स को करते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो भारत को होता है। अमेरिका में एक आदमी निकल करके स्कूल में किसी को गोली मार दे, किसी की गर्दन काट करके उसको फुटबॉल की तरह लात मार दे, उसका कोई न्यूज़ नहीं बनती, उसके ऊपर कभी अमेरिका इज अनसेफ कोई कहता नहीं है। जिस तरह की हालत फ्रांस में, जिस तरह की हालत लंदन में, जिस तरह की हालत इटली में, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बार विदेश जाते होंगे, शायद वो जो है उस हालात कोई कि हम 100% अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करें, ऐसा नहीं। इटली में उतरते हैं तो पहले बताते हैं कि अपने वॉलेट को और कैमरे को शर्ट के अंदर डाल करके रखो। पहले हमारे लिए उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब सबसे सेफ स्टेट है। इसलिए जो है ये जो निगेटिव पब्लिसिटी की जाती है, हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना, इस 140 करोड़ लोगों के देश में एक छोटी सी घटना हो जाए, उसको लेकर के हमारा मीडिया जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से हम दिखाते हैं, और उसका निगेटिव इंपैक्ट इंटरनेशनली जिस तरह से होता है, इंडस्ट्री को इस पे बड़ी खड़े होकर के साथ में भारत सरकार के साथ में काम करने की आवश्यकता है। नो वन कैन टार्निश द इमेज ऑफ ए नेशन विच इज ट्रांसफॉर्मिंग। इसके लिए मुझे आप सब लोगों के सहयोग की, आप सब लोगों के साथ की आवश्यकता है, बिकॉज यू आर द इन्फ्लुएंशियर्स, यू आर द फेस ऑफ our nation, you are the brand ambassador of our industrial, and you are the captains of industries, though you are you are representing different industries, लेकिन आप सब लोग जो है भारत के एम्बेसडर के रूप में, इकोनॉमिक एम्बेसडर्स के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए मैं उस सब में आपके सहयोग की आप सबसे आकांक्षा रखते हुए
जो कुछ भी इंडस्ट्री को, इस टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, हम सब लोग खुले हृदय से आप सब के साथ में इस विषय पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको जो है एक बार फिर आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए, मैं आप सबको जो है एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम जो है भारत को पर्यटन की पूरी क्षमता को अनलॉक करते हुए, पर्यटन की पूरी संभावनाओं को अनलॉक करते हुए, हम भारत के युवाओं की और भारत के भविष्य की को अनलॉक करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। हम द इंडिया एज को अनलॉक करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की। So I'm audible. Is the mic is working? Okay. What a nice way to kickstart, because I had not spoken with the Honorable Minister. Everything that he mentioned is a part of a very quick presentation that I'm going to make. That shows that there is an alignment between the government and the sector. The acceptance that what are the issues confronting us is getting closer and closer day by day. More importantly, I would repeat what he said. He said it in Hindi, Paryatan Rozgar hai, Paryatan soft power hai. I think the very fact that there is an acknowledgement that tourism can be the next soft power of India is phenomenal. That tourism can create employment is phenomenal. That tourism can contribute, the words he said, 3 trillion to the economy is phenomenal. For every 1 rupee spent, there could be 3.5 rupees of economic value added is phenomenal. So, having said that, while I go through the slides, you will see some things that he mentioned. Actually, most of what he mentioned is there. See, today, India's economy is expected to grow from 4 trillion to 30. The Honorable Minister even mentioned 32 by 2047. From a $250 billion industry sector, we can get to 3 trillion, which means a contribution of 10%, which he also mentioned. That is the possibility, because that means the growth in tourism will be much faster than the growth of the economy. So obviously tourism becomes a very important contributor. That 1 rupee becomes 3.5 that you can see here. I don't know why our DG Tourism says 5% or 5.5 or less than 6. That's where I would differ, because it's not my own statistics. The source is National Statistics Office, is 6.6%. Contribution to tourism, of which more than 75% is coming through domestic, which is almost 185 billion. Many states are already above the 10%. So J&K, I would say, then Rajasthan, Goa are 16, 17%. Uttarakhand is high, Kerala is high, and Sikkim, etc. These are the newcomers, as the Honorable Minister mentioned about Meghalaya, about Arunachal. If we were to make the same presentation in 1 or 2 years from now, you will see these names coming on the map. This shows one thing, that the possibility of having more than a double-digit growth is very high.
And even in a state like UP, which he mentioned, which was different before, but is considered more safe than many other places, has gone into a double-digit contribution. And what happened during the Kumbh actually surprised everyone, not just the state government, but the entire nation in terms of its contribution to the GDP of the state. More importantly, we tend to forget one very simple fact in India, and that is these percentages is not something you take to a bank account. We have a lot of people unemployed in unorganized sector. That includes your shikarawala in Kashmir to rickshawala in Kashi Vishwanath temple, taking you temple, and many such others, the one who helps you put the rafting boats together, etc. They don't come into any kind of percentages. So you have a formal percentage and an informal percentage. So in my opinion, even today, that would, if we add all that, would come to more than 8% contribution, including to a massive contribution in employment. It's also been given a lot of importance that 1 crore of investment in this sector creates 80 new jobs. And therefore, there is a belief that 45 million employed people today can get to 100 million by 2047. And the 35 billion in terms of foreign exchange earnings can grow also more than 12x to 450 billion. Exactly as the Honorable Minister said, Taj Hotels took 1903 to 1973 to open Rambagh. It got to its first 50 hotels in almost 100 years of existence. It got to its next 50 hotels in the following 10 years. But in the last 3 to 5 years, any guesses, we have added more than 400 hotels. So that is how change can come, and the speed of transformation of our company is the speed of transformation of this sector. People sitting on this dais in their own businesses have proven that. There are listed companies, so you can read the statistics on what they are doing and what has been achieved. So 450 billion is not some kind of a myth, it's almost real. Having said that, there are certain things with the great improvement in infrastructure. I always say the renaissance of train stations, the lovely new airports being built, which is doubling in total. There is still, and the highways, etc., there is still that last mile connectivity. We somehow leave the last few kilometers in a very bad state. You know, I always give the example, if somebody comes home to check your Wi-Fi, the Wi-Fi starts working, but something else stops working. He cuts something else before going. So I think something we need to improve in terms of our focus on detail and focus on quality when it comes to infrastructure. Cost of capital in this sector is very high. It's in high double digits. Not every place has infrastructure status. The minister very nicely said the 50 new destinations and the 1 million population, but there is a lot of possibility in between, and I don't see any reason why we should have a gap there in this sector versus others if it's going to contribute so nicely to the GDP and so nicely to the employment and policy fragmentation because of our federal nature of the government and the difference in the central needs and the state needs. Having said that, we came up with 6 Ps, which we think could be the execution roadmap. One is on planning. That is seamless connectivity, on which a lot of work is being done, maybe the fastest growing infrastructure in the world. Inclusive and responsible tourism and building of facilities. 3 have happened which have changed the way MICE works in India. One is your Bharat Mandapam, Yashobhumi and Jio in Mumbai. If an event is happening in Jio, then within the 5 square kilometer radius, it's impossible to find a room. When large conventions, global conventions, start coming to India, to Yashobhumi or to Bharat Mandapam, because it takes time to book these events, just imagine 10,000, 12,000, 15,000 people
who need accommodation, what will happen in the capital of India. So I think there is a lot of things that need attention on that front. And in our opinion, India needs 350 airports, which means 50 new airports in the next 5 years and 350 by 2047. Then the second P is the place, developing new destinations. Yes, they were announced in the budget speech of Honorable Finance Minister on 1st of February. We have crossed 1st of December and we have not identified those. We need to identify those quickly in a mission mode. Again, that announcement and the infrastructure status can be given by the center, but because it is to be developed in a mission mode, the states have to play their role too. So I hope we are able to expedite that. Ensuring the cleanliness, hygiene, state-of-art facilities, responsible destination management. So when you get to a destination, it has to be as nice as it is when you arrive at the airports and you take the trains, and still maintaining safety and security. I think no matter what happens in the US, it's a very different kind of a place on this planet. I think the reality is we have to see what happens in India and what happens in the rest of our neighboring countries is very, very important. So we need that safety and security. Today, 75% of the leisure tourist traffic is concentrated in 15 to 20 destinations of India. There is nothing wrong with that, but that shows the potential. If we grow new destinations, how much more leisure traffic can increase. People, this is our biggest potential. We have the best, we are the best in terms of getting the young population in the world, and we have still not reached our sweet spot. We'll reach our sweet spot by 2030. So skilling and development of human capital, rewards, recognition of incentive schemes, and partnering with global institutions to up the game, to up our standards of service, and not only be, globally more competent, but also set new benchmarks that we can. And for that, people is one of our important resource and important strength. 60% of our workforce lacks formal training. Having said that, that's also a luxury problem. At least we have the people to do the work. When you go today to Western Hemisphere, there are hardly any people available to give you the service. You have to carry your own luggage in hotels, and it's very, very difficult to find people to do service with very strong immigration rules. And actually, I've spent 3 decades outside of India, and so has our DG Tourism, most recently lived in Europe. Entire Europe is eyeing our young population to, incentivize them, relax the immigration rules so they can come and work there. It's no more a visa prohibition policy, it's rather a visa enabling policy to come and start work. When I first went, the rules that were there versus what it is today, there is a relaxation of 500%. On policy making, much has been spoken about industry status and infrastructure status. Let's add to that inclusion in the concurrent list of constitution. Our constitution, as we all know, was done in 1947. That time tourism could not have been a subject. Today it is. So at some point we need the help of the Honorable Tourism Minister and rest of the people to put it in the concurrent list so it will also get added as a priority sector in many states. We need a national tourism policy, we need a national tourism board so that everything works seamlessly between the state and the center and that policy alignment can take place. We need at least 2 million additional rooms, which requires 1 lakh crore of rupees capital to